So in this chapter or in this class, we are going to discuss about the effect of heat as the change in the shape and size of any object. So when we supply heat to any kind of matter, then we used to observe that there can be different kinds of effects, as we had seen that change in the temperature, change in the physical state of the matter. In the same way, we can also see that change in the shape and size of a body. So when we observe the change in the shape and size of the body, then we used to observe it that the body or the object used to either expand or contract. तो जब हम लोग ये कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट एक्सपैंड हो रही है या वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसका शेप एंड साइज चेंज हो रहा है. या फिर दूसरे दूसरे लैंग्वेज में अगर हम लोग कहते हैं कि अगर हम लोग हीट के कारण किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप एंड साइज में किसी तरह के चेंजेस देख सकते हैं, that is due to or that is because of the expansion or the contraction in that particular matter. So there are so many different examples and different situations where we used to observe them. So here we are going to discuss about for some kind of solid objects. तो जो basically solid objects होती हैं उसमें कैसे expansion होती है, that we will study, and then we will little bit study about the fluids also, that how the fluids used to expand. So let's start for that one. So when we go for the expansion in solids, यानी जब हम लोग बात करते हैं किसी भी तरह के solid matter में expansion के या फिर वहां पर change in shape and size के बारे में बात करते हैं, then we used to go for or we classify that state into three different conditions. हम लोग इन तीन basic conditions में इसको classify करते हैं. So what that is first is the linear expansion, the second is the superficial expansion, and the third is the cubical expansion. हम लोग इस तीन तरह के एक्सपेंशन के रूप में सॉलिड को समझते हैं. ठीक है, तो पिछले क्लास में हम इसके बारे में कुछ डिस्कस कर रहे थे, उसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे और फिर हम लोग इसके बारे में कुछ डिटेल में समझेंगे कि इसका कैलकुलेशन कैसे किया जा सकता है या इसको रिप्रेजेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं. वेदर यू हैव टू स्टडी अबाउट हीट इन योर हायर क्लासेस आल्सो, एंड देयर अगेन यू विल स्टडी सम मोर थिंग्स एंड सम न्यू थिंग्स रिगार्डिंग टू these things, these relative topics. Okay, so here the linear expansion, सबसे पहले हम लोग linear expansion के बारे में बात करते हैं. So linear expansion is the increase in the length of a solid on heating. So अगर किसी तरह के कोई solid object है, जैसे कि for example a rod or something like that, in that if you are heating it from one corner, अगर तुम उसको एक corner से heat करते हो, then what happens, the heat used to transmit in a linear manner, वो straight travel करती है and it reaches to the other end. And because of this transferring of heat from one molecule to another molecule in the linear manner, it will change the shape and size of this body by increasing its length. So when the length has been increased due to the supplying of heat, that is called to be the linear expansion. Whereas when we talk about a metallic sheet, a metallic thin sheet of any kind of metal we can take over there, and when we are supplying heat over there, then we used to observe that the heat is not going in only one direction, but the heat is transmitting to in its two different directions, because as it has a more surface area over here, so heat is not only been transferring or been traveling to in one direction, but in two different directions. So this side also it will go, as well as it will go to this side. So we will observe that there will be a change in its length and its breadth. So when we are supplying heat to any kind of thin metal sheet, then we used to observe that due to the heat, the area of the metal sheet used to change, because as there will be a change in the length and breadth, that will result it in the change in the area of the metallic sheet. On the other hand, if we will go for any kind of thick metallic sheet or thick metallic body, then we will observe that the heat will transfer or the heat will be transmitted throughout the body in its three different directions. So it will go along its length, it will go along its breadth, as well as it will go along its height. So in all the direction there would be a change in the shape and size, and because of this change, because as the length, breadth and height is changing over there, we will observe that there is
is a change in the volume of the body. So these are the three basic conditions. So once again, you please remember for this thing, अगर हम लोग हीट सप्लाई करते हैं किसी भी ऐसे बॉडी में जिसकी 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 लेंथ ज्यादा है, या फिर वो एक रॉड के शेप में है, तो वहां पर अगर हम लोग हीट सप्लाई करते हैं तो उसकी लेंथ इंक्रीज करती है। हीट की सप्लाई होने से वहां पर एक्सपेंशन जो है वो हमको लीनियर एक्सपेंशन देखने को मिलता है, यानी उसके उसके लेंथ में एक्सपेंशन को देखने को मिलता है, एंड दैट इज कॉज टू बी द लीनियर एक्सपेंशन। एंड अगर कोई कोई मेटेलिक बॉडी है जो कि प्लेट या शीट के शेप में है, तो वहां पे जब हम लोग हीट सप्लाई करते हैं, देन हीट यूज टू ट्रांसमिट इन इट्स टू डिफरेंट डायरेक्शन, इन अलोंग इट्स लेंथ एज वेल एज अलोंग इट्स ब्रेथ। तो ये दोनों डायरेक्शन से ये ट्रेवल करती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी ऑब्जर्व दैट द एरिया यूज टू चेंज, एंड दैट इज कॉल्ड टू बी एज द सुपरफिशियल एक्सपेंशन। एंड अगर हम लोग किसी तरह के बहुत मोटे या फिर काफी काफी थिक ऑब्जेक्ट के लिए बात करते हैं, देन द हीट व्हिच इज सप्लाइंग ओवर देयर, इट इज चेंजिंग द लेंथ, it is changing the breadth, as well as it is changing the height. Hence, overall, we will observe that the volume used to change over there. So these are the conditions which we are going to understand. So here you can see several examples are there regarding for the linear expansion or the superficial expansion and the cubical expansion. So these are the things which we are going to discuss in little detail in separate manner. So we will see about it. सो व्हाट इज लीनियर एक्सपेंशन? तो अभी भी जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे, लीनियर एक्सपेंशन है क्या? तो सिंपल तरीके से अगर हम लोग इस क्वेश्चन को आंसर करना चाहते हैं, वी कैन से लाइक दिस थिंग दैट इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ एनी सॉलिड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड द लीनियर एक्सपेंशन। जब हम लोग किसी भी बॉडी को, किसी भी तरह के सॉलिड ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं और उसके लेंथ में इंक्रीज अगर हमको देखने को मिलती है, उसकी लेंथ अगर बढ़ी हुई होती है, देन वी यूज टू ऑब्जर्व दैट इट इज कॉल्ड टू बी एज द लीनियर एक्सपेंशन। इसको हम लोग लीनियर एक्सपेंशन के रूप में समझ सकते हैं। मेरी पहली एक इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनी हुई है और उसको तुम लोग यूट्यूब में देख सकते हो। हम जब ये वीडियो देंगे तो उसमें एक ऊपर में आई बटन में दिया हुआ रहेगा उस वीडियो का लिंक, थ्रू दैट ऑल्सो you can see that one. So over there I had used some animation, and with that animation I had explained that how this linear expansion used to go for this thing. Now how we can represent this? अगर हम लोगों को इसको represent करना है, अगर हम लोगों को इसको numerically represent करना है, then how we can represent this one? So we can represent it with this simple equation. So इस simple equation को use करके हम लोग इसको represent कर सकते हैं. So over here, this L is representing the actual length or the real length of the object for which we are taking the condition, or for which we want to increase the length. Over here, this delta L is showing the change in the length. So suppose, for example, earlier or in the previous condition, we had taken the length as 1 meter of the rod, and later on we found that the length has been changed to 1.2 meter. So over here, the change in the length would be 0.2 meters. So that is the change in the length which we have to see. Then the delta T is representing for the change in the temperature. So what does this mean? This means that the amount of the heat which we had supplied. So at the very beginning, when the heat has been supplied over there, then we can see that the heat which we are giving, due to that only we are able to increase or change the length of the metallic body. तो जो हम लोग मेटलिक बॉडी के लिए बात कर रहे हैं, उसमें जो हीट देते हैं, उसी के कारण वहां पे चेंज हो रही है उसके शेप एंड साइज, यानी उसकी लेंथ जो वहां पे चेंज हो रही है। और जब भी हीट सप्लाई होगी, देन ऑब्वियस थिंग इज दैट वी विल ऑब्जर्व अ चेंज इन द टेम्परेचर। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड ओवर हियर दिस अल्फा इज द साइन व्हिच इज शोइंग दैट द कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन, यानी कितना लीनियर एक्सपेंशन होगा, व्हिच डिपेंड्स ऑन द मटेरियल व्हिच वी आर यूजिंग। जिस तरह के मटेरियल का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, उस मटेरियल में कितनी एक्सपेंशन होने की चांसेस है, उस चीज को रिप्रेजेंट किया जाता है कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन। बिकॉज एट द वेरी बिगिनिंग, व्हाइल आई वाज डिस्कसिंग अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ हीट, आई हैड सेड दिस थिंग वेरी क्लियर दैट द इफेक्ट्स ऑफ हीट कैन बी ओनली ऑब्जर्व्ड where we can see that the heat can be transmitted in the body. यानी हम लोग उन्हीं चीजों में इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं, या फिर इस चेंज को ऑब्जर्व कर सकते हैं, या इन इफेक्ट्स को देख सकते हैं जो कि हीट को कैरी कर सकती है।
अगर हीट वहां पर कैरी ही नहीं होगी तो वहां पर हम लोग किसी भी तरह के इफेक्ट को नहीं देख सकते हैं. In the other words, you can say this thing that all these effects can be observed for the conductors. Basically, जो conductors है, heat के जो conductors हैं, over there only we can see these kind of things. हम लोग वहीं पर इस तरह की चीजों को देख सकते हैं. If that is an insulator, then we will not observe this particular thing. So that you have to understand over here. So when we are expressing, when we are going for this expression, then we go for this thing that the change in the length upon the actual length of the rod is equals to the product of the coefficient of the linear expansion, means for the material which it depends on, with respect to the change in the temperature. Or we can say for this thing also that the change in the length is equals to the product of the actual length of the rod or the material for which we are taking, with the coefficient of the heat which or the coefficient of the linear expansion which that material will support, with the change in the temperature which is caused over there. So this is the formula which we can establish, or this is the formula which we can write to show that how the linear expansion is there, or how much the linear expansion is there. As I said earlier, as in the example, that suppose for that the previous length is of 1 meter. Okay, after supplying of heat, it had changed to 1.2 meter. So there is a change in 0.2 meter. So that 0.2 meter change with respect to the change in the temperature will be expressed in this equation. As in this particular class, you don't have to go for any kind of numerical method, numericals to solve, but you need to remember the formula. यहाँ पे तुम लोगों को numericals तो नहीं solve करना है इस क्लास में, लेकिन हाँ, method जान के रखो, formula जान के रखो, which will be helpful for you in the future class. Okay, so I hope that you all had understood till here. So linear expansion को हम लोग कैसे represent कर सकते हैं, linear expansion है क्या, और उसको हम लोग किस तरह से calculate कर सकते हैं. So these are the things which you need to remember for the condition of linear expansion. Now let's understand for the superficial expansion. So superficial expansion, over here we used to go for a thin sheet. ये याद रखना है, ये पैटर्न याद रखना है. हम लोगों ने इससे पहले देखा था कि एक रॉड, जब एक स्ट्रेट रॉड के बारे में बात किया जाए तो वहां पर अगर हम लोग हीट सप्लाई करते हैं, देन वी यूज्ड टू ऑब्जर्व दैट द हीट यूज्ड टू एक्सपैंड और हीट काउजेस द चेंज इन इट्स लेंथ. बट जब हम लोग किसी मेटलिक शीट के बारे में बात करते हैं और जब वहां पर हम लोग हीट सप्लाई करते हैं, then we used to observe that it expands through its all the directions, means its length and its breadth. So from its length or along its length and along its breadth, there will be an expansion. There will be a new length. There will be a new breadth. And when this used to cause, then we will observe that the area will be changed. So previously, this would be the previous or original area, and due to the heat supply, we had observed that the body had expanded. And as the body had expanded, we will observe that there would be a change in the surface area. So that will be expressed over here. So over here, when you will see that this AO is representing the original area of the material for which we are talking. So for a particular metal, it would have a certain length with its certain breadth. Now, when heat has been supplied to it, when we had given heat over there, then we will observe that there will be a change in an area. So this delta A is showing the change in the area, means there would be a new length along a new breadth. Now, there would be a change in temperature. Until and unless we are not supplying heat, we will not observe any kind of change over there. So you have to see that due to the temperature, due to the change in the temperature, only this expansion would be observed. And how much change in the temperature, how much we are increasing the heat along to that, or on the basis of that, only we will observe that how much expansion has been done over there. यानी जितना हम लोग हीट देंगे उसके बेसिस पर ही हम लोगों को ऑब्जर्व होगा कि वहां पर कितना एक्सपेंशन होने वाला है. इट इज नॉट लाइक दैट एट एवरी टेम्परेचर और एट एवरी अमाउंट ऑफ हीट द एक्सपेंशन विल बी इन द सेम वे. ये नहीं होता है कि सभी मैटर या सभी तरह के मटेरियल जो है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही उतने एक्सपैंड कर जाएंगे. अलग अलग टेम्परेचर पे उनकी एक्सपेंशन की जो रेट होती है या जो उनका एक्सपेंशन होता है वो अलग अलग होता है.
And then we will have over here, so again I'm using the alpha over here, but you can represent it by beta also. Okay, so this would be said to be as the coefficient of the superficial expansion. This beta is actually the product of two alphas. Okay, so this is the product of two alpha. So two alpha is representing what? That represents the linear expansion. तो देखो जब लेंथ में वहां पर इंक्रीज होगी, जब वहां पर ब्रेथ में इंक्रीज होगी, तो लेंथ और ब्रेथ दोनों इंडिविजुअली एक एक लेंथ को दिखाती है या फिर एक लंबाई को दिखाती है। तो जब इंडिविजुअली वहां पर वो इंक्रीज होती है, so then we will obtain for the length there is one alpha, and then for the breadth one alpha is there. So the product of these two would be representing for the beta. So you can say this beta is the coefficient of the superficial expansion. So this beta is representing the coefficient of superficial expansion which we will observe for a metallic sheet when the heat been supplied to it. जब हम लोग उसमें heat supply करेंगे तो उसमें कितना expansion होगा, इस चीज को समझने की जरूरत है। इस चीज को चलो एक और एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि एक मेटलिक शीट है और उसकी लेंथ मेरे पास 1 मीटर बाय से 80 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। और ये सपोज बना हुआ है आयरन से, and there is another metallic sheet of the same dimension, say as this is 1 meter and this is 80 centimeter, and this has been made up of aluminum. So when the amount of heat will be supplied to these two metals, a certain amount of heat, एक certain amount of heat को ही हम लोग supply करेंगे, then we will observe that the expansion would be in different form. Okay, and one more thing is that the thickness is also very very important. As we are talking here, it is a thin sheet, so it will not be a very thick one. ओके यहाँ पर चूंकि हम लोग थिन शीट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये बहुत मोटा नहीं होगा, ये पतला सा एक कोई शीट होगा जिसकी डायमेंशन इक्वल है, इक्वल अमाउंट की हीट दी जा रही है, लेकिन वहां पर एक्सपेंशन का जो अमाउंट होगा वो अलग होगा, विच विल डिपेंड ऑन द कोफिशिएंट ऑफ द सुपरफिशियल एक्सपेंशन फॉर दैट पर्टिकुलर मीडियम. So with this one, if you go for the formula, then you will say for it as that the change in the change in the area upon the actual area is equals to, so over here this 2 alpha, this 2 alpha is actually representing the two different lengths. So that is the length and breadth. So you can use this one over, as I said, beta you use. Okay, so beta into delta t. So you can say that the change in area is equals to the product of actual area of the metal sheet into the superficial coefficient of the expansion in the area into the change in the temperature of the body. So this will give you the change in the temperature, the change in the area, how much area has been changed over there. So this is the basic calculation which you need to remember. Okay, so I hope that this portion is also clear. Is there any doubt till here, students? No, sir. Okay, then we can move to the next one and we will see the cubicle expansion. अब हम लोग देखते हैं cubicle expansion क्या है. तो cubicle expansion is again a kind of expansion as we had gone through previously. Over here we will see that the increase in volume on heating is called the cubicle expansion. जब हम लोग heating के कारण volume में change देखते हैं तो उसको हम लोग cubicle expansion कहते हैं. देखो पिछले वाले में हम लोगों ने देखा था कि thin sheet लिया था, अब हम लोग यहाँ पर एक थिक मेटलिक बॉडी ले सकते हैं. तो जब हम लोगों के पास एक थिक मेटलिक बॉडी होगी और वहां पर हम लोग हीट सप्लाई करेंगे, देन वी विल ऑब्जर्व दैट द हीट विल एक्सपैंड along its length, along its length, along its breadth, as well as along its height. So there would be a change in the length, there would be a change in its breadth, and there would be a change in its height. So when these three components got changed, then we will observe that the body will have a new volume. वहां पर एक नया volume हम लोगों को देखने को मिलेगा, and that is the main component which we are seeing in the cubical expansion. तो जब हम लोग cubical expansion को पढ़ते हैं, तब हम लोग volume में change को देख सकते हैं. So over here you can see this VO is representing the real volume or the actual volume of the body. This delta V is representing the change in the volume. This delta T is representing the change in the temperature. And over here also I had used this alpha to represent the coefficient of cubical expansion, where this 3 cube.
So 3 alpha. So what this 3 alpha is? So as there is a change in length, there would be a change in breadth, as well as there would be a change in height. So all for these, if I will see, then they have an individual coefficient of expansion. So for these, we will go for 3 alpha. So you can say over here that is as a beta. तुम लोग इसको बीटा के रूप में ले सकते हो, ठीक है? So this can be expressed as in the form of a beta. So when you are going for the expressing it, means तुम जब इसको दिखाना चाहते हो एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में या फिर एक इक्वेशन के बेसिस पर, so you can use this formula. Over here you have the change in the volume, this delta V upon the actual volume is equals to the superficial coefficient. So not the superficial coefficient, that would be the cubical coefficient. The cubical coefficient over here, because this length, breadth, and height, all three components are changing. So we will say for cubical expansion, which is beta, which is showing actually change in length, change in breadth, and change in height. So with this, the change in temperature means until and unless we are not give the heat, we are not changing the temperature, we will not observe the change in the volume over there. So you can go for this thing that the change in volume is equals to the product of the original volume into uh, gamma with the change in the temperature over here. This gamma which we are using, that is the product of three different expansion. This is for the length, this is for the breadth, and this is for the height. So with all these three, we get for this gamma, so which is called to be as the coefficient of the superficial expansion. So with this one, you will be able to calculate that how much change in the volume has been occurred over there due to the supplying of heat. तो ये बेसिक सा चीज हम लोगों को समझने की जरूरत है। तो जब हीट सप्लाई करते हैं तो किसी बड़े भारी ऑब्जेक्ट या कोई बड़े ऑब्जेक्ट जिसका साइज बड़ा है, या मतलब जिसमें जिसमें एक क्यूब या क्यूबॉइड या एक बड़े शेप का कोई अगर ऑब्जेक्ट है, तो वहां पर हीट जो है वो उसके चारों तरफ से, यानी उसके लेंथ के साइड से, ब्रेथ के साइड से और हाइट के साइड से क्रॉस करती है, जिसके कारण हम लोग देख सकते हैं कि इस तरह का सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। So this is the condition of the expansion through its all three situation. Now we will see for the expansion in liquids and gases. अब liquid और gases के बारे में भी समझ लेते हैं कि liquid और gases में expansion होता है कि नहीं होता है. See students, expansion can be observed in all kinds of matter. It is not that only in solids we can experience expansion, as this is a common property of heat. So it can be observed for in all the states of matter. So whether it is solid, liquid or gas, चाहे वो solid हो, liquid हो या gas हो, हर किसी में हम लोगों को ये expansion देखने को मिल सकती है, ठीक है? तो तुम लोगों के सिलेबस में इस बार के लिए बेसिकली सॉलिड का ही डिस्कशन किया गया है, तो इसलिए सॉलिड को ही हम लिए हैं, लेकिन गैसेस और लिक्विड्स को भी समझने की जरूरत है। हम लोग इसको भी समझेंगे जब हम लोग हीट को और ज्यादा डिस्कस करेंगे, हीट के बारे में और भी हम लोग को पढ़ना है। तो फिलहाल एक छोटा सा नोट तुम लोगों के लिए है कि थर्मल एक्सपेंशन इन द लिक्विड्स एंड गैसेस कैन बी ऑब्जर्व्ड ओवर हियर। तो यहाँ पे तुम लोग देखोगे कि हम लोग कुछ अलग अलग लिक्विड्स लिए हैं। सो ओवर हियर वी हैड टेकन वाटर, देन एथर, देन बेंजीन एंड देन इथेनॉल. So ethanol is a kind of alcohol only. So when we are taking all these four different kinds of liquids and they had been taken to a particular quantity, ये सभी जो है वो एक particular quantity में लिया गया है, और इनको at the very beginning the temperature was also common. वहां पर वो कॉमन टेम्परेचर पे ही लिया गया था, एंड देन दे हैव बीन इमर्स्ड इनटू हॉट वाटर. ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर में हॉट वाटर है, गर्म पानी है, इसमें hot water is there. So as this hot water contains heat, due to this heat what happens, it is expanding different liquids. तो यहाँ पे जो अलग अलग liquids हैं उनको वो expand कर रहा है. तो जब वो expand कर रहा है वहां पर, तो देखोगे कि इनमें expansion में सबसे जो ज्यादा expand कर रहा है वो है ether. ठीक है, ये कॉमन केमिकल है जो हम लोग यूज करते हैं कई सारे तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए. केमिस्ट्री में तुम लोगों ने पढ़ा भी होगा. तो ये जो है ये सबसे ज्यादा एक्सपैंड कर रहा है. फिर अगर इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो बेंजीन एक्सपैंड कर रहा है, फिर हम लोग इथेनॉल को एक्सपैंड होते हुए देखते हैं, और एट द एंड वाटर को देख रहे हैं, बिकॉज ओवर हियर आल्सो वाटर इज देयर.
Okay, and over here also water is there, and water used to be able to absorb a large amount of heat. ये हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जो जो पानी हम लोग इस्तेमाल करते हैं या जो वाटर यूज करते हैं, इट हैज अ वेरी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड इट शोज मिनिमम एक्सपेंशन ओवर देयर। तो ये चीज हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हम बताएं कि हम लोग आगे की क्लासेस में और डिस्कस करेंगे, बहुत कुछ हम लोगों को पढ़ना है हीट के बारे में। यहाँ पर हम लोगों को जो इस टॉपिक को जो मेनली समझना था वो था एक्सपेंशन को, तो इसीलिए एक्सपेंशन के लिए यहाँ तक हम लोग को देखना है। अच्छा, सिर्फ लिक्विड्स में ही नहीं बल्कि हम लोग गैसेस में भी एक्सपेंशन देखते हैं, जिसके कारण हम लोग कई सारे तरह के चेंजेस देखते हैं। एक कॉमन सा चेंज जो कि तुम लोगों ने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा, हाई प्रेशर एरिया एंड लो प्रेशर एरिया ड्यू टू द चेंज इन द हीट। तो जब किसी पर्टिकुलर एरिया में एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इंक्रीज हो जाती है, तो वहां पर जो एयर होती है वो हल्की हो जाती है, because they used to expand, and as they get expanded, they become lighter, and when they become lighter they used to move in the upward direction, वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है। And those places which are nearby to that area which has a hot atmospheric situation, क्योंकि हम लोगों का अर्थ पे हर जगह पर एक जैसा ही टेम्परेचर नहीं होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। तो कहीं पर अगर गर्म इलाके हैं, so over there the density of the air will be more because they are not so much expanded. Sorry, not hot area, cold area, because I had already taken this one as a hot area. यहाँ पर हम पहले ही हॉट एरिया ले चुके हैं। बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपेंड, द एयर हैड एक्सपैंडेड एंड दे हैड स्टार्टेड मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। So over here the area around to this place which is little bit cool down, or it has a lower temperature, यहाँ पर जो उसकी टेम्परेचर है वो थोड़ी सी कम है। So because of that the air would be more denser over there, वहां पे एयर की डेंसिटी ज्यादा होगी, वो उतनी ज्यादा एक्सपैंड नहीं होगी। because of that they will run to fill this space, इस स्पेस को भरने के लिए ये दौड़ती है, due to which wind used to cause, I hope that you all had studied the cause of wind, or which leads to the formation of the cyclone, or any other kind of weathering conditions. So that is because of the change in the temperature which leads in the expansion and contraction of the gases। ठीक है, तो जब हम लोग साइक्लोन देखते हैं या जब हम लोग टॉर्नेडोज देखते हैं, तो वो वहां पर विंड के इसी बिहेवियर को दिखाता है, या हवा के उसी बिहेवियर को दिखाता है कि हवा के वो मॉलिक्यूल्स जो हीट के कारण एक्सपैंड हो चुके हैं, वो हल्के हो चुके हैं, वो ऊपर भागना चाहते हैं, और उसी दौरान जो आसपास में जो ठंडे इलाकों के जो हवा है, जिनके मॉलिक्यूल्स नजदीक हैं, वो पास की तरफ या उनके इनके तरफ आना चाहती है। और अलग अलग जगहों पर इसी के कारण कई सारे तरह के फेनोमिनाज हम लोग देख सकते हैं, जैसे अभी भी बताया, साइक्लोन का फॉर्मेशन होना, या टोर्नेडो का फॉर्मेशन होना, या कंटिन्यूअसली हाई स्पीड विंड का फॉर्मेशन होना, स्टॉर्म का फॉर्मेशन होना, इन सब में इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। और साथ ही साथ जो एयर गैस बलून होती है, जैसे कि ये वाली, इसमें भी हम लोग एयर के एक्सपेंशन को ही समझते हैं। जब इसके अंदर एक बर्नर होती है, इस बर्नर को जलाया जाता है, because of this what happens, the air which is inside it, जो हवा इसके पास आती है, it gets hot and it becomes lighter, and as it becomes lighter it tries to rise up, वो ऊपर की तरफ बढ़ना चाहता है, and because of this it creates a pressure, or it creates a force in the upward direction which makes this air balloon to go higher and higher. So this is the phenomena which we need to understand for the expansion. So I hope that you all had understood this condition of expansion. Is it clear to everyone, or is there any Yes, sir. Yes, sir. doubt? Is there any doubt No, anywhere? sir. No? Okay, so as I said, that one more video related to this expansion is already in the YouTube. I will give the link of that video also in the I button, and you all can go through that one and see. And these are the things only we have to discuss today. तो यहीं तक हम लोग आज के लिए रखते हैं, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ और डिस्कस करेंगे। तो तुम लोग एक बार प्लीज यहाँ तक रिवाइज करके रखना, कहीं पे भी कोई भी डाउट्स या कुछ भी प्रॉब्लम अगर होती है तो उसको प्लीज टिक आउट करके रखना, so that we can see it in the next class. Okay, so I'm ending the class over here for now. Thank you. Good night, everyone.